Should take 1 more minute, but I think this question should have been answered by now. Take 1 more minute. See here guys, all of you. Oh, my bad. ये सवाल थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है. Wait a second. This is 2s guys, okay? This is 2s. Not 3s, that is 2s. So you see here guys, n is equal to 2, L is equal to 1. यहाँ पे देख लीजिए the values of L and the subshell. I think ये शायद आप लोग को नहीं याद हो. तो 0, 1, L is azimuthal quantum number 1, 2. So ये 4 भी आप लिख सकते हैं. So 0 के लिए होता है S subshell, 1 is for the P subshell, 2 is for D subshell and 3 is for the F subshell. है ना? 4 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? G subshell हो जाएगा. So please write this down. Now from this you can understand 2, 1 का मतलब क्या हो गया? P हो गया, 2P. 3 and L is equal to क्या मतलब हो गया? This is 3D. 3 and 0 का क्या मतलब? 3 का मतलब 3, 0 का मतलब S, 3S. 2, 0, this is 2S. Okay. So these are the different orbitals. तो 2p कहाँ पे है? A का हो जाएगा क्या? 2p is in third. A का हो जाएगा 3. Then B का कितना हो जाएगा? B will be 4. A3 B4. और बचा C. C हो जाएगा आपके पास 3S which is 2. So option number A is correct. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Alia, Haider, Anna, and Abhinav. Yes or no, guys? Yes, sir. Okay. I was expecting ये याद नहीं था क्या आप लोगों को? Tell me, guys. ये याद नहीं था आप लोगों को? हैदर आप बताइए. सर याद तो था. पर अच्छा 11th को बहुत दिन हो गए है ना. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम समायरा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, गुड सर. ओके, बहुत दिन बाद आपने ज्वाइन नहीं किया पहले. काफी सारे आपके लेक्चर्स मिस हो गए. You have missed small concept solution. Yeah. Chemical contents. My exam got over on 1st April. Sorry, what? My exam got over on 1st April, so that's it. अच्छा, क्या कौन सा पेपर था 1 अप्रैल को? Home science. होम साइंस के लिए आप रुके हुए थे? होम साइंस से पहले क्या था? बायो? Yes, sir. That was somewhere on 15th को कुछ था ना, 15-16 को, राइट? कब था बायो? 16th है ना. हाँ भाई, 15-16 को भी तो था, राइट? अच्छा, ज्वाइन कर लेना था. होम साइंस क्या टफ रहता है क्या? होम साइंस? हाँ समायरा.
But Samay, then also it is a scoring subject, so I want to score good marks in that. अच्छा, ठीक है. चलिए. I hope all of you have written this. Samayra, आप इसका screenshot ले लीजिए. This is a simple question asking. You have given the quantum number, you have been given the principal quantum number and the azimuthal quantum number. उसके corresponding क्या orbital या फिर कौन से subshell के बारे में बात हो रही है? You have to just match the following. Okay. So moving on. Try this. 4d, 5p, 5f, and 6p orbitals are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is. Now there is a rule that is known as n plus l rule. ठीक है, जिसका n plus l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. n means the principal quantum number. I hope now अब आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. 4 का मतलब क्या हो गया 4, d का क्या मतलब हो गया, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d. हाँ गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? जी 4d क्या हो जाएगा? 4 प्लस d की क्या वैल्यू है? यस आलिया, व्हाट अबाउट अदर्स? 2 वैल्यू है ना. तो आप यही ऐड करना, 4d के लिए ऐड कीजिए, 5p के लिए, 5f के लिए एंड 6p के लिए. ठीक है, एंड देन यू विल कंपेयर द वैल्यूज ऑफ n plus l. जिसका n plus l वैल्यू ज्यादा, इफ इट इज हायर देन इट्स एनर्जी इज आल्सो हायर. व्हाट इफ n plus l becomes सेम? अगर दोनों के n plus l रूल, n plus l क्या आ जाए, सेम आ जाए, वैल्यू सेम आ जाए, देन यू विल लुक एट n. जिसका n बड़ा होगा उन दोनों के बीच में उसकी एनर्जी बढ़ होगी. ठीक है, सो आप n पे तभी आइएगा व्हेन यू हैव कंपेयर्ड n plus l. इफ n plus l is same then you will come to n. Try this. Take 2 minutes. ऐसे तो वालों के 2 मिनट से ज्यादा नहीं है. Take 2 minutes. Okay, Abhinav and Heather are getting same answers. 2 मिनट में थोड़ा टाइम बाकी है, so let me just wait. Half minute remaining, है ना, 30 seconds are remaining. Okay, let us see. First of all, you have 4d. 4d का क्या हो जाएगा, 4 plus 2 that is equal to 6. Then we have 5p. 5p का क्या हो जाएगा, 5 plus 1 that is also equal to 6. Then we have 5f. 5 plus 3 ना, that is equal to 8. ठीक है, and then we have 6p. 6p क्या हो जाएगा, 6 plus 1 that is equal to 7. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 5f उसके बाद 6p होना चाहिए. Greatest should be 5f and 6p, that is b and c में. Now what is having higher energy between 4d and 5p? Both of them are having the value of n plus s are equal to 6. Then you will look at the principal quantum number. Principal quantum number is greater in 5p. That is why 5p will be having the highest energy. Sorry, 5p will be having higher energy than 4d. So 4d will be having the least energy. So 4d, then 5p, then 6p, and then 5f. So C is the correct answer.
जी भाई, क्यों आप लोग कर क्यों नहीं रहे हैं? अभिनव ने नहीं आंसर दिया, एना ने आंसर नहीं दिया, समायरा यू आल्सो डिड नॉट आंसर। ठीक है, सर मैंने आंसर दिया तो। आपने आंसर दिया? ओह सॉरी, माय बैड अभिनव, सॉरी। आई थॉट दैट वाज फॉर द प्रीवियस वन। करेक्ट करेक्ट, yeah, you also gave the answer. I either gave the answer or Alia gave the answer. Anna and Samaira. ठीक है, expecting answers from you in the next question. How many electrons can fit the orbital for which n is equal to 3 and L is equal to 1? Yeah, Abhinav, that is correct. Abhinav, sorry, Abhinav correct है, हैदर correct नहीं है आपका। आप ABCD में आंसर करें प्लीज, ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज आंसर इन टर्म्स ऑफ ABCD। Okay, no, Heather, that is not right. चलिए, all of you will tell me what is the meaning of n is equal to 3 and L is equal to 1? 3 and which subshell? Tell me guys, which subshell? 3? Yes, Anna correct, very good. Yes. 3s नहीं होगा ना भाई मेरे, आपने ओ लिखा 3 नहीं P क्या? 3 P आपने लिखा नहीं है, लिखा है या लिखा नहीं है लिखा सर, है? लिखा है सर। हाँ, तो फिर ऐसे गलती नहीं कीजिए ना, 3p। और p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? We have 6 electrons in the 3p। ठीक है, आलिया it will be B not A, है ना? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, ये सुनो। यस सर। 3p में। एंड उसके बाद अगर ये लोग बोल देते हैं m is equal to 0, that means they have specified an orbital। p में से एक ऑर्बिटल उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, that means अब उस for this specific quantum numbers we can have only 2 electron because एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, but they have only given us still azimuthal quantum number। ये सवाल देख लीजिए, इफ यू कैन रिमेंबर तब आप तुरंत आंसर कर पाइएगा, अदरवाइज आई विल हैव टू एक्सप्लेन दिस। Which of the following pairs of d orbital will have electron density along the axis? So there are two different types of d orbital। एक d orbital होते हैं which are axial and the other d orbitals are non axial। जो axial होते हैं they have lobes on axis and non axial में lobes are not on the axis। तो जो axial lobes होते हैं these are 2 dx square minus y square and there is dz square। नॉन एक्सियल वाले होते हैं आपके पास dxy, dyz and dxz। ठीक, so what they're asking, which of the following pairs of d orbital have electron density along the axis? Electron density along the axis क्या मतलब हुआ? Electron density, that means lobes on the axis। So the option is correct is C, dz square and dx square minus y square। Please write this down। Assalamu alaikum Iram, how are you? Walaikum assalam, sir. I'm fine. Fine, you're late। You're I'm not sorry. fine, क्या हुआ था? What happened? Sir, I had stayed up last night to study, so I had fallen asleep. This ओहो, time. तो आप कंपनसेट कर ले रहे हैं ना, ज्यादा पढ़ लिया तो अभी तो कम पढ़ ले रहे हैं आप, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। It's fine। अब अगर कोई मान लीजिए सो ही जा रहा है तो उसमें आदमी क्या ही कर सकता है कि नहीं?
Yes, sir. अब आप उठ गए हैं तो आपने क्लास ज्वाइन कर ली, दैट इज गुड। फिर सो जाता तो हम नहीं डांटते उतना। हाँ, लेकिन ये आप लोग जो लुलु मॉल जाते हैं ना, ये मिडिल ईस्ट वाले, देना ही से उधर मत जाइए, है ना। फिर सो गया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ट्राई दिस वन, दिस फॉर एवरीवन बाय द वे। हाँ, आदत नहीं बनाना है ना। एक बच्चा था वो हमेशा 5-10 मिनट लेट आता है, क्या हो रहा है सर, थोड़ा सो गए थे हम दिन में, थोड़ा सो गए थे दिन में। देन यू शुड नॉट मेक ए हैबिट। कभी कभार हो गया, कभी कभार पूरे क्लास में सो चाहिए आप, है ना, आप अटेंड ही नहीं किए, कोई बात नहीं, चलता है अपना। ट्राई दिस क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर चल रहा है इरम, बताइए जरा, विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? Structure of atom. हाँ, करेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, अभिनव, लेट मी सी। करेक्ट है। Two electrons occupying same orbital are distinguished by, है ना। ABCD में आंसर करें, ज्यादा टाइम आप लोग मत वेस्ट कीजिए, ABCD में आंसर कीजिए। यस, इरम करेक्ट, वेरी गुड। यस, समायरा करेक्ट, वेरी गुड। एक ऑर्बिटल है आपके पास और इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। These electrons will be distinguished by which quantum number? यस, आलिया करेक्ट है ना। अब तो सबको समझ में आ गया होगा। It will be distinguished by spin quantum number, है ना। एक होगा +12 and the other is going to be -12. Okay, so it is going to be distinguished by spin quantum number. अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज अब लिख ही देते हैं ना, since it has been mentioned azimuthal quantum number। सबसे पहले principal quantum number। Principal quantum number tells you about the shell number, ठीक है, it talks about the shell in which electron is present। Then comes azimuthal quantum number, it tells you about the subshell in the shell, कि एक शेल के कौन से सबशेल में। Principal quantum number can be 1, 2, 3 and so on, and for each principal quantum number there are specific azimuthal quantum number which are what, 0 to n-1, ठीक है। If the shell number is 3, so you will calculate n-1 कितना हो जाएगा, 2। So the subshell which will be present inside the third shell will be S subshell, P subshell and D subshell। 0 होगा, 1 होगा और 2 सब, है ना। So 0 is for S, P and D, ठीक है। Next, what do we have? In each subshell we have different orbitals, and different orbitals is given by this magnetic quantum number, orbitals in a subshell, ठीक है। अच्छा, orbitals in a subshell, it is going to be -L to +L। अब ये तो आपका, अब पूछेगा L क्या है, L is the azimuthal quantum number, this is N, magnetic quantum number is M, spin quantum number को आप S लिख सकते हैं या फिर M subscript S। Spin quantum number is going to tell you about the spin of electron in an orbital। इसकी दो ही वैल्यू हो सकती है, it will be either +12 or it is going to be -12। Will you write this down? Let me know once you're done। I hope everyone is done। इस सवाल को देखिए जरा। This is asking you about angular momentum, ठीक है। किसका angular momentum? Of the orbital angular momentum
of p electron. Okay. So what is the formula for orbital angular momentum? It is L into L plus 1 into h upon 2 pi. This L into L plus 1, it is inside the square bracket. Sorry, it is inside the square root. H upon 2 pi, it is not inside the square root, है ना? And h upon 2 pi, it is also written as h cross. एक सवाल एक बार it was in this question it is given by h upon pi है. एक सवाल में शायद नीट का वो एग्जाम था जिसमें h क्रॉस के टर्म्स में भी दिया हुआ था. ठीक है. So please write this down and then do this question. p इलेक्ट्रॉन के लिए I hope all of you know what is the value of L and उसको आप किसमें प्लग इन कर दीजिएगा इस फॉर्मूले में L into L plus 1 into h upon 2 pi. After plugging this in, आप उसको कैलकुलेट कीजिए. थोड़ा सा आपको यहीं पे काटना छाटना पड़ेगा and then you will get the answer. Yeah, I think yes, Abhinav, that is correct. See here guys, L into L plus 1. What is the value of L? L की value है 1. 1 into 1 plus 1, that is equal to 2. 2 into 1 will be equal to root 2. ठीक है. Root 2 into h upon 2 pi. Okay, so root 2's are, this is going to give you h upon root 2 pi. That is the first option A. So try this question. Take 3 minutes for this question.
Please let me know once you're done, guys. Send your answers on chat. One more minute remaining. अच्छा ठीक है, अभिनव देखते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस सी दिस क्वेश्चन। Fe2 plus that means Z यहाँ पे दिया हुआ कितना 26। Z26 किसका होता है? एटॉमिक नंबर इज 26 ऑफ फॉर आयरन। ठीक है, what will be the atomic, what will be the number of electrons here? यहाँ पे 24 electrons ही होंगे and its electronic configuration will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 because 2 electron निकल गए and then you will have 3d6. So how many d electrons? What there are? The number of d electrons in Fe2 plus is not equal to the number of electrons in which one of the following. That means हमको देखना है कि 6 electrons के बराबर कौन नहीं। ठीक है, यहाँ पे d में कितने electrons है? 6 electrons है and we have to see what are the number of electrons in each of these different types of substances. Let us look at Fe. So it will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d6. तो d electrons in Fe, तो d electrons कितने हैं यहाँ पे? d electrons is equal to 6 है यहाँ पे। तो this is equal to the number of electrons। ठीक है, let us see in the next one। p में देखते हैं p electrons में क्या हो जाएगा आपके पास? 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, राइट? z is equal to 10, 6 4 10 हो गया। ओके, now here also you can see that p electrons कितने हैं यहाँ पे? p electrons it is equal to 6 है ना। p electrons टोटल कितने हमारे पास? 6 हैं। mg में देखते हैं, it is 1s2 2s2 2p6 and 3s2। अब यहाँ पे most of you who have written the electronic configuration correctly, उन्होंने भी ये mistake किया होगा when it said s electrons in mg। बताइए कितने s electrons हैं अभिनव? how many s electrons are there in mg? what did you take? yes, sorry, yes Abhinav? yes Abhinav, how many s electrons? यहाँ पे भी आपके पास इसमें 2 + 2 4 + 2 6। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। तो सिर्फ बचा ऑप्शन कौन सा? क्लोरीन वाला ऑप्शन, इसको भी देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 हो जाएगा। 6 4 10 10 12 13 3p4 हो जाएगा ना, 3p5, right? It will be 3p5। In this case number of p electron is equal to how much? 6 + 5, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से 6 + 5 11। Okay, so that is the correct option। ठीक है, so all of you did it right। अभिनव, हैदर एंड आलिया, है ना? हाँ, बस यही तो उन्होंने आंसर किया था। Those who have not done, प्लीज जल्दी जल्दी लिखिए।
We're moving on. Try this. What is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers? Just talking about orbitals, इसको ध्यान रखिए. Orbitals और electrons के इसमें difference है. Okay. M represents the orbitals. M represents the magnetic quantum number जिसको orbital represent करता है ना. For example, चलिए हम इसको explain कर लेते हैं. This is 3 and this is P. P में you will have 3 orbitals, right? ठीक है. और M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? If L is equal to 1, M will be equal to minus L 2 plus L. तो minus L क्या हो जाएगा आपके पास? -1 0 and then you will have +1. ठीक है. Now 0 will be one of these, but generally 0 को PZ माना जाता है, which is the middle one. PZ, PX, PY और यहाँ PZ. Now it is one of the orbitals. ठीक है. तो एक orbital को ये identify कर रहा है. That means it is A option. Understood, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. And if they asked what is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers, और वो M नहीं देते, तब 3p में कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 3 ऑर्बिटल्स. तो आप वो लिखते हैं. ठीक है. सिमिलरली इफ दे सेड n is equal to 3 and L is equal to 0, तो इसमें 3s आ गया और इसमें कितने आइडेंटिफाई हो सकते हैं ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल. इफ दे गिव n is equal to 4 and L is equal to, let us suppose, 2, तो 4d हो जाता है. and here we will have 5 electrons. but इसके साथ अगर उन्होंने m is equal to 1 दिया रहता +1, तब फिर से यहाँ पे क्या हो जाता? 1 ऑर्बिटल लूप होता. that means it would have meant 1 orbital and that is why it should be only 1 orbital with 2 electrons. So try this. Identify the incorrect statement. देखिए, all the 5d orbitals are different in size when compared to respective 4d orbitals. That is true because 4d orbital will be smaller because they belong to the 4th orbit, और 5d वाले क्या होंगे? They will be comparatively larger. All the 5 4d orbitals have shapes similar to respective 3d orbitals. हाँ, shape तो d orbitals का, चाहे वो 1 का हो, 2 का हो, sorry, 3 से start होता है, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, जिसका भी d orbital हो, all of the d orbitals will have similar shape. In an atom, all the 5 3d orbitals are equal in energy in free state. Yeah, that is also true. That it is why क्या बोलते हैं? 5 degenerate orbitals. Degenerate का क्या मतलब होता है? It is having same energy. All the d orbitals have same energy. All the p orbitals have same energy. All the f orbitals have same energy. है? तो f के जितने p orbital हैं, we have 7 orbitals in f. 1 to 3. है ना? 7 orbitals. All of these 7 orbitals are what they are having equal energy. दोनों में कोई energy का difference नहीं होता है. Now they are saying the shapes of dxy, dyz and dzx are similar. ये बात तो सही है.
इनके सब क्या होते हैं, शेप सिमिलर होते हैं. And dx square minus y square are also similar to each other, but that is not true. dx square minus y square का जो shape होता है, it is like this. One lobe is here on the axis, the other lobe is here on the other axis. और जो dz square का shape होता है, that is two lobes here on the z axis and one donut type ring that is on the xy plane. This is dz square. So obviously these two are very different in shape. That is why this statement from here to here, it is not right. And इस option को हम correct करेंगे and this statement is incorrect. Please write this down. Try this question. Let me know once you're done, guys. Answer कीजिएगा. Wrong statement कौन सा है? Yes, either correct. Please see here, guys. Total orbital angular momentum of the electron in s orbital is equal to 0. That is true because L into L plus 1 root over, and you have h upon 2 pi. If this L is equal to 0, this whole thing will become 0. Then this whole thing will also become equal to 0. That is why this is a true statement. And आपको क्या पता करना है? Wrong statement. An orbital is designated by 3 quantum numbers, while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers. That is also true. Orbital के बारे में information कौन देता है? 3 quantum number. That is the principal, azimuthal, and the magnetic. Now about an electron, we need another quantum number, that is the 4th quantum number, spin quantum number, that tells you about the spin of the electron. So this is also a true statement. But if you look at the electronic configuration of nitrogen, जो उन्होंने लिखा है यहाँ पे, nitrogen has 7 electrons, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सही भरा है. But this filling of electron is not right, because according to Hund's rule of maximum multiplicity, initially all the orbitals or the degenerate orbitals should be filled with, will be singly occupied with same spin. और यहाँ पे उन्होंने क्या किया? Spin को change कर दिया. Then they have said the value of m for dz square is equal to 0. Yeah, that is true, because generally जो m की value जो 0 होती है, that is for the z orbital, है ना?
तो pz की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली dz स्क्वायर विल बी आल्सो इक्वल टू 0। ओके, दैट इज आल्सो ट्रू। बट ये स्टेटमेंट आपको जो दिख रहा है सी वाला, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Try this one. Isoelectronic means same number of electrons will be present. Yes, Iram, correct. Yes, Samaira, correct. Alia, correct. Very good. Yes, Anna, correct. Very good. The option, correct option is B, है ना? Lithium +1. What is the atomic number for beryllium? Beryllium का atomic number होता है 4. 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, आपको बचा 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का atomic number था 3, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, आपके पास बचा 2. That is why both of these are isoelectronic. Try this question. अच्छा, अब the next 2-3 questions, these are from E is equal to hc upon lambda and it is also equal to h nu. ठीक है, तो nu will be equal to what? Nu will be equal to c upon lambda. A particular station of All India Radio, New Delhi, broadcast a frequency of 1368 kilohertz. The wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter is equal to how much? So आपको frequency दी हुई है, ठीक है, आपको frequency दिया हुआ है और उन्होंने क्या पूछा आपको? They have asked about the wavelength. Now there is एक आपको हम सजेशन ये करेंगे कि ऐसे सवालों में ना जहाँ पे आपको पता लग रहा है बिल्कुल कि कैलकुलेशन आने ही वाला है, राइट? यू हैव कैलकुलेशन देयर, इनएविटेबली वहां पे क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, आप ऑप्शंस को थोड़ा सा नजर दौड़ा लीजिए ऑप्शंस में। ओके, तो ऑप्शंस को देखने से आपको समझ में आ रहा है 21.92, 219.3, 219.2, 2192 meters. So all of these value require a good level of accuracy while calculating, जो कि manually calculate करके आपको नहीं होगा if you want to save time. If the options are so nearby, है ना, अगर options यहाँ पे क्या है, इतनी ज्यादा नजदीक है यहाँ पे, then I would suggest that leave these type of questions. Okay, because I hope all of you know, NEET में सारे सवाल नहीं करने रहते, वो नहीं ही करना रहता है। ऐसा नहीं कि आपको आदमी आके बोले कि हम सारे सवाल करके आए, that will be a very coincidental thing कि जो सारे सवाल करके आ रहे हैं और सारे उसके सही हो रहे हैं। There are some questions जो नीट में रखे इस वजह से जाते हैं ताकि आप लोग कैलकुलेशन में थोड़ा फंस जाए और टाइम बाउंडेशन की वजह से फिर दूसरे लोग उसको वहां पे अटेम्प्ट कर ले, दूसरे सवाल को अटेम्प्ट कर ले। तो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर कि कौन सा सवाल छोड़ना है। तो इस सवाल को क्या करना है बताइए? टेल मी गाइस व्हाट वी हैव टू डू विद दिस क्वेश्चन। वी हैव टू लीव दिस क्वेश्चन। तो इसको, इस सवाल को हम लोग यहाँ पे भी लीव कर दे रहे हैं, ठीक है? आपको मन करे तो होमवर्क कर लीजिएगा आप इसका, हाँ ठीक है, आपको मन करे तो इसका होमवर्क कर लीजिएगा। द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 219.3। हम आपको अभी बता दे रहे हैं, जहाँ तक हमको याद आ रहा है। अब आप ये देखिए 219.3, और वो भी जानते हैं आंसर कैसे आएगा आपका? 219.29 ऐसे आएगा। अब कोई बच्चा 209.2 तक आके उसने आगे कैलकुलेशन नहीं किया, डिवीजन नहीं किया उसने, तो वो तो सी मार्क क्या जाएगा, गलत हो गया उसका। एक तो टाइम गया, कैलकुलेशन में टाइम बहुत जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरी चीज गलत भी होकर आ जाएगा बिकॉज इस 219.29 करके आंसर आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेट करके आप 219.3 मीटर्स लिखिएगा। ओके,
So these type of questions are specifically present, जो कि आपको छोड़ना रहता है, ठीक है। चलिए आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको करने का मन हो तो। बट हाँ, ये फॉर्मुलेज लिख लीजिए, है ना। अब नाउ वी आर गोइंग टू दैट, उस जोन में जा रहे हैं, क्वांटम नंबर से हट के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हट के, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाउ डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स वेयर देयर, ठीक है। किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स थे। बोर मॉडल देखेंगे, बोर मॉडल तो नहीं देखेंगे, बट वी विल सी द मैथमेटिकल रिजल्ट ऑफ द बोर मॉडल। उसके बहुत चंद सवाल आते हैं आपके पास, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द नीट एग्जामिनेशन, इफ यू विल सी, इट इज फ्रॉम द क्वांटम नंबर्स वाले एरिया से आएगा, इस कैलकुलेशन वाले एरिया से बहुत कम आएंगे, ठीक है। अगेन कैलकुलेशन वाले से आएगा तो हम तो आपको यही बोलेंगे कि उसको छोड़ दीजिए, बायो का कुछ सवाल कर लीजिएगा जब तक आप लोग, है ना। बायो आप लोग का बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, ट्राई दिस। हाँ अच्छा, इस सवाल में देखिए, इस सवाल को नहीं छोड़ना है। आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस देख रहे हैं आप। आपने अगर, आपने मान लीजिए इसको कैलकुलेट नहीं भी किया, इफ यू इवन गॉट दी एक्सपोनेंट्स लाइक 10 के पावर का भी आपने अगर सही आंसर दे दिया, तब भी आप 10 टू द पावर 15 आ गया, तो बस इसी को टिक करना है ना। इफ यू गॉट दी 10 टू दी पावर्स करेक्ट, तब भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। सो इस सवाल को नहीं छोड़ना है, दिस यू डोंट हैव टू लीव दिस क्वेश्चन, इवन दो इसमें कैलकुलेशन अलाउड है, बट द चांसेस ऑफ डूइंग मिस्टेक इज वेरी लेस, ठीक है। तो इसको, इस सवाल को करने का है, इस सवाल को तो छोड़ ही देने का, चाहे आपके पास टाइम हो चाहे आपके पास टाइम नहीं हो, बिकॉज कोई बच्चा अगर 219.2 तक आके गलत करके चला गया तो क्या ही बात है, ठीक है। तो इस सवाल को तो छोड़ ही देना, चाहे आपके पास टाइम हो चाहे नहीं हो, तो उस सवाल में टाइम लगा लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी नीट केस में तो ऐसा नहीं है कि सारे सवाल हो पाएंगे, टाइम नहीं रहता है लोगों के पास। ट्राई दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर एंड प्लैंक्स कांस्टेंट उन्होंने दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, दैट इज E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कीजिए इसको, टेक 3 मिनट्स। थोड़ा सा आपको दिमाग चालू रखना है कि आपके पास फ्रैक्शन जो आए, एक तो आपके पास क्या आएगा, एक्सपोनेंट्स आए, एंड देन यू विल हैव अनदर थिंग व्हिच इज फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस जो आए ना, दैट शुड नॉट बी इन 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इस तरह का फ्रैक्शन आप लेके आइए, तभी आपके पास सही आंसर आएगा, बिकॉज इफ न्यूमरेटर इज स्मॉल है तब तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा, और 0 पॉइंट वाला आंसर कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एवरीथिंग इज इन 4.4.4.4.6.6, ठीक है। तो न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी कि आंसर किस तरह से किया जाता है, ठीक है। चलिए try this question. You guys have like 2.5 minutes. Yes, Anna, I think that is correct.
Let us look at the answer. 6.63 into 10 to the power minus 34 joules per second multiplied by 3 into 10 to the power 8. This is into 10 to the power minus 34 into 10 to the power 8 divided by lambda. Lambda is equal to 45 nanometer, 45 into 10 to the power minus 9. We have 6.63 into 3 divided by 45 multiplied by, we have 10 to the power minus 34 into, we have 10 to the power 8 and minus 9 will go above, it will become plus 9, 9 plus 8, 17. So this will be 17. Now please see here, 16 into 3 is 18. 16, 6, sorry. 6 3 is 18 and 6.6 into 3 will be somewhere near 20. कभी भी वो क्या होगा 45 के करीब नहीं आएगा. That means I have to take at least one more digit यहाँ से. ठीक है. यहाँ पे हम क्या करेंगे 6.63 into 3 into 10 ले लिया हमने 10 to the power 17 से डिवाइड बाई 45. अब ये क्या हो गया 10 to the power minus 34 into 10 to the power 16 बच गया. Now what is this value? 10 to the power minus 18. कौन सा 10 to the power minus 18? B is 10 to the power minus 18. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. All of you understood this now? Why I took 10? Yes, Yes. Alia. No. Yes, sir. हमने 10 यहाँ पे इस वजह से लिया क्योंकि I have to keep the numerator bigger than the denominator, है ना? इस टाइम में न्यूमरेटर छोटा था. है ना? तो you can also confirm यहाँ पे 16 3 हम इसको मान लेते हैं almost equal to 20 मान लेते हैं. ठीक है. 6.6 into 3 20 into 10 200 200 divided by 45. 45 को अगर आप 50 मान लें तो this will be somewhere near 4, है ना? Somewhere near 4 आपका आंसर भी आ रहा है यहाँ पे. But the specific thing is 10 to the power minus 9 minus 18. Try this. अब देखिए यहाँ पे भी the chances of mistake happening is very less because 50 75 10 and 25 these are very different numbers, and the value of light cast is the speed of light is this much, the value closest to the wavelength in nanometer. तो wavelength आपको निकालना है. Light with the frequency दिया हुआ है आपको. mu is equal to c upon lambda. Lambda will be equal to c upon mu. जो भी आंसर आए आपके पास दिस विल बी इन द टर्म्स ऑफ, अच्छा ठीक है इसको कैलकुलेट कर लीजिए खुद से ही. ये ध्यान में रखिएगा क्या दिया हुआ है. ठीक है मिलीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है. Yes, Samira, correct, very good. Yes, Alia, correct, very good.
Yes, that's the correct. Very good. Okay, I hope all of you are getting the answer. 50. 50 nanometer. Try this question. E1 is equal to Hc upon lambda 1, which is equal to how much? 25 electron volt. E2 is equal to Hc upon lambda 2, which is equal to 50 electron volts. है ना? E1 upon E2 कर दीजिए. ठीक है. So you will have Hc और Hc cancel हो जाएगा. You will get lambda 2 upon lambda 1 will be equal to 25 upon 50. Lambda 2 upon lambda 1 will be equal to 25 upon 50. 2 sir. So lambda 1 will be equal to 2 times of lambda 2. ये आंसर आएगा. Lambda 1 will be greater. ठीक है. चलिए, write this information. पहले लिख लीजिए इसको, then I will explain. Radius of atom पहले लिख लीजिए. Here guys. Now radius of an atom. This is one of the important formula that जो आप याद कर लीजिए. Rn is equal to 0.529 into n square upon z. One thing is the formula. है ना? एक तो exact formula 0.529 into n square. N means the shell number, z means the atomic number of the atom. This will give you the answer in the terms of angstrom, that is 10 to the power minus 10 meters. एक तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. दूसरा, you have to remember the format of this particular formula. Format क्या है इसका? This is a constant into n square upon z square. ठीक है. अगर मान लीजिए एंगस्ट्रॉम की जगह कुछ और होता तो 0.529 नहीं होकर क्या होता? 5.29 करके कुछ होता, राइट? एवरीथिंग, अगर इफ यू आर गोइंग टू चेंज द यूनिट इन व्हिच यू वांट द रेडियस ऑफ द एटम, ये कांस्टेंट में वैल्यू चेंज होगा. n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर तो सेम रहेगा. दैट इज व्हाई वी कैन राइट Rn is equal to R0. अच्छा, R0 क्या है? R0 can be written as the radius of the first orbit of hydrogen atom. You, because if I keep this as n square को हम अगर 1 ले ले, 1 means the first shell, atomic number भी हम 1 ले ले, that means the hydrogen atom. तो hydrogen first shell का radius क्या हो जाएगा? 0.529 angstrom. That is the constant
into the unit, ठीक है। तो कांस्टेंट को आपने ले लिया आर नॉट, इन मेनी ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी गिवन आर नॉट, है ना, आर नॉट के टर्म्स में भी दिया रहता है। तो आर नॉट क्या है, आर नॉट ये कांस्टेंट ही, एंड आर नॉट इज आल्सो द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट radius is directly proportional to the shell number and it is inversely proportional to the atomic number, because जिस तरह से shell number बढ़ता जाएगा, as the shell number is going to increase, the radius will also increase, and if the atomic number is increased, the proton number will increase, and the protons are going to attract the electron, shrinking the size of the atom. That is why atomic number की inversely proportional है। atomic number ज्यादा, proton number ज्यादा, तो size क्या होगा, shrink करेगा, radius कम हो जाएगा। Now if you have same atom, then the radius of two different shell will be having this relationship, r n1 upon n2 will be equal to n1 upon n2 square, है ना, n1 square upon n2 square या फिर n1 upon n2 का whole square, ठीक है, radius of the first orbit divided by second orbit. But if you have two different atoms, then in that case you will have radius of the first orbit divided by second orbit will be equal to n1 upon n2 का whole square multiplied by z2 upon z1. This is for two different atoms with two different shell. Now when we talk about the energy of electron in the nth shell, energy हमेशा ध्यान रखिए, energy is going to be a negative quantity in each shell, because proton और electron के बीच में क्या होगा, there will be attraction, that is why it is going to be negative. Now we have two different energy levels, E1 and E2. आपके मान लीजिए this is orbit number 1, this is orbit number 2, the first orbit, second orbit, final orbit, initial orbit, आप किसी भी तरह का नाम दे सकते हैं। Now both of them, E2 क्या हो गया, -13.6 z square upon n2 square electron volts per atom, ठीक है। E1 आपके पास सेम फॉर्मूला आ गया, बस n1 यहाँ पे आ गया। Just remember one thing, n1 should be smaller and n2 should be larger. Now either they ask what is the emission, what light, what frequency of light it is emitting, what energy of light it is emitting, yeah, they ask you what energy of light is going to be absorbed. For both of them you are going to use this formula delta E, that is the change in energy. If you are going from lower energy level to higher energy level, or coming from higher energy level to lower energy level, the change in energy will be equal to 13.6 z square multiplied by 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. n1 square कौन सा है, चाहे absorb हो रहा हो चाहे emit हो रहा हो light, it is always the smaller one, ठीक है। नेक्स्ट वन थिंग इज एट, आपको हमने दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, दिस आल्सो विल बी कमिंग इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम को जूल में कैसे चेंज करना है, 1.6 into 10 to the power -19, ठीक है। तो कहीं कहीं जूल से पूछा रहेगा तो आप इस तरह से इसको याद कर लीजिए। चलिए प्लीज राइट दिस डाउन आल्सो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस। Done everyone? Let me know once you're done, guys.
Let's try this question. Here guys, based on the equation E is equal to minus 2.78 into 10 to the minus 18 joules z square upon n square. ये कौन सा इक्वेशन हो गया आपके पास? दिस इज दिस इक्वेशन एनर्जी है ना, एनर्जी वाला इक्वेशन हो गया. Which of them is not correct? Equation can be used to calculate the change in energy when the electrons changes the orbit. तो आप n को change कर दीजिए, आपको energy का change मिल जाएगा, right? So this equation can be used. For n is equal to 1, the electron has more negative energy. देखते हैं इसको. आपने क्या रखा? n is equal to 1 रखा. And than it does for n is equal to 6. ठीक है. अच्छा, n is equal to 1, that means this whole quantity will be larger because denominator छोटा है. Denominator छोटा है तो फिर आपका पूरा number क्या हो जाएगा? It will be larger. ठीक है. So it has more negative energy. That means electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit. अब ये statement जो है, this is inherently wrong because if you have a orbit here और आपके पास proton यहाँ पे है, smallest orbit जो है, it is nearest to the proton and that is why it will be what? It will be tightly bound. Loosely bound कैसे होगा? Tightly bound होगा. And more negative means more attraction. है ना? अगर आपको कोलम्बिक लॉ जो है फोर्स का, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू k into q1 q2 upon r square, right? Upon r square. So if q1 and q2 are both positive, तब तो पॉजिटिव होगा, तब रिपल्शन होता है. दोनों अगर नेगेटिव हो तब भी फोर्स पॉजिटिव में आएगा एंड देयर विल बी रिपल्शन. बट इफ इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन ओनली देयर विल बी अट्रैक्शन, और तब क्या होगा? नेगेटिव में होगा. दैट मींस मोर नेगेटिव मींस मोर अट्रैक्शन. सो दिस बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. Try this one. If the radius of Bohr orbit of He plus ion is 105.8 picometer, what is the radius of third Bohr orbit of lithium 2 plus? इसमें आप लोग इस वाले इक्वेशन को यूज करेंगे और n1 n2 is equal to n1 plus n1 upon n2 का स्क्वायर upon into z2 into z1. ठीक है. You have radius of He plus divided by radius of Li2 plus. ठीक है. He plus का क्या हो जाएगा? n1 upon n2 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स number of the orbit of He plus divided by orbit of Li2 plus. ठीक है, multiplied by Z2.
द एटॉमिक नंबर ऑफ Li2 प्लस, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई Z ऑफ हीलियम प्लस। तो व्हाट इज द N ऑफ हीलियम प्लस? ऑर्बिट क्या है इसका? सेकंड ऑर्बिट है, लिथियम का ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, तो स्क्वायर की जगह हम इसको इंटू 2/3 कर देते हैं, मल्टीप्लाइड में। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? एटॉमिक नंबर 2 है। नाउ यू कैन कैंसिल फ्यू थिंग्स, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो रेडियस ऑफ हीलियम इन्होंने कितना दिया हुआ है? 105.8 दिया हुआ है। रेडियस ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा? सो radius of lithium 2 positive will be equal to 105.9 into 3 divided by 2. This will be in terms of picometer, हाँ। अब देखिए, जब आपके पास all of these are what, काफी सारे अलग है ना, इसमें टेंस का डिफरेंस है। आप इसमें सीधे लिख सकते हैं 100 into 3 somewhere around 300 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, this will be 150। तो 150 से थोड़ा ज्यादा कौन सा है? 150 से थोड़ा ज्यादा है इन पिकोमीटर, इट इज A, 158.7। That will be the correct option. ये बताइए। ये तो आपको कैसे ही जवाब देना चाहिए। According to the Bohr theory, which one of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energetic proton? Sorry, least energetic photon. यानी उन्होंने पूछा डेल्टा ई सबसे कम कहाँ पे होगा? डेल्टा ई विल बी स्मॉलेस्ट, जहां पे आपके पास क्या है, इट इज विल बी स्मॉलेस्ट अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यानी n1 और n2 के बीच में जहां कम वहीं ज्यादा, राइट, वहीं पे एनर्जी कम रहेगी। ओके, सो हम बोलेंगे 6 में तो बहुत ज्यादा, 4 और 5 हो, एंड 6 and 5 में आपके पास क्या होगा? इट विल बी हैविंग द एनर्जी डिफरेंस। अच्छा, आप बोलिए सर 5 और 4 में इस वजह से नहीं, बिकॉज 6 and 5 एन 1 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर में बहुत कम डिफरेंस होगा, रादर देन 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 5, बिकॉज 1 अपॉन 6 क्या है, 6 बड़ा है, तो इस वजह से ये नंबर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लिख लीजिए इससे, लेकिन बस एक ही सवाल आया हुआ है, दैट टू वो भी ऐसा सवाल है जो नहीं करने वाला है, वो भी ऐसा सवाल है जो नहीं करने वाला, उसमें काफी कैलकुलेशन है, फिर भी लिख लीजिए आप लोग। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज व्हाट? व्हेन यू हैव अ लाइट दैट इज हिट ऑन अ मेटल सरफेस, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ व्हेन यू आर हिटिंग a particular metal surface, the electrons in those metal surface will have a threshold energy. अगर उतनी एनर्जी आपने नहीं दी तो वो नहीं निकलेगा, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? इसको डिनोट करते हैं WC, which is also known as work function. Now energy है तो it can be written in the terms of frequency, तो h into mu naught, because h is a constant, so variable will be frequency, that is the mu naught. h into c upon lambda, lambda यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, तो lambda, ठीक है। तो दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगा। नाउ इफ यू आर hitting the metal surface with a particular energy, then there will be some amount of energy which will be used for the work function, और बाकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी, ठीक है। सो विद व्हाट स्पीड द इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग अवे, तो वो भी कौन डिटरमाइन करेगा? द फ्रीक्वेंसी और द एनर्जी ऑफ लाइट दैट इज हिटिंग द मेटल सरफेस। द एनर्जी ऑफ द लाइट दैट इज हिटिंग द मेटल सरफेस इज यूज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द वर्क फंक्शन, एंड दूसरा कहाँ पे यूज होता है? काइनेटिक एनर्जी में यूज होता है। नाउ आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आल्सो। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द एनर्जी दैट वाज गिवन बाय फोटोन, ठीक है, और W इधर चल जाएगा, you will have minus W, that is minus the work function h into mu naught, ठीक है। So these are the another just अलग अलग फॉर्मूले के फॉर्म्स हैं, प्लीज इनको लिख लीजिए। There are other topics also, जैसे आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, then you have uncertainty principle है, then you have de Broglie's equation है, so all of these topics are there, but again उससे सवाल बहुत ही ज्यादा कम आए। I would ask you guys to focus on what the quantum numbers, और quantum numbers के अलग अलग सवाल देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि quantum numbers अगर आपको theoretically आता तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको सारे सवाल भी आते हैं quantum numbers के, because you must have seen कि approaches, जो सवाल देने का तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है। तो सिंपल सवाल नहीं है कि ये particular set of quantum number exist करेगा या नहीं करेगा, they can ask questions related to quantum numbers in different types of ways, ठीक है। तो focus on questions on quantum numbers only, अभी के लिए कम से कम, ठीक है। बाकी ये कैलकुलेटिव सवाल हम नहीं चाहते नीट वाले बच्चे करें, हत्ता मतलब इफ इट इज प्योरली फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर तब तो वो करें, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मेन पोर्शन है ना, दैट इज क्वांटम नंबर। व्हाई? बिकॉज क्वांटम नंबर इज यूज्ड इन डिफरेंट अलग अलग चैप्टर्स में यूज होता है। एस ब्लॉक में जाइए, पी ब्लॉक में जाइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइए, इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, यू हैव टू, हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल आपको पता होना चाहिए। यू गो टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं एंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके। तो क्वांटम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। All of you done? Yes or no? Please tell me. Is everyone done? Okay. Yes, sir. इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए. This will be homework for you guys. They have asked when electromagnetic radiation of wavelength दिया हुआ इन्होंने falls on a metal surface, electrons are emitted with the kinetic energy दिया हुआ इन्होंने, है ना? What is the minimum energy required to remove the electron from the metal? They are asking about the work function. The work function W plus K होता है.